last time in our session, we have seen that what are the qualities of teacher, how a teacher should be. And the teacher word itself says that she is teaching, right? So now let us see art of teaching. What is that art of teaching? Okay. And what do you understand by the word teaching now? What is teaching? Teaching is nothing but, we have discussed this also. Teaching is nothing but not only academics, but also we have to show them wisdom. Okay, we have to show the values, moral values, everything. We have to make them a perfect human being. Total holistic development we have to do for them. We have to plan out in that way. So the purpose of teaching, what is the purpose of teaching? To impart knowledge. Impart knowledge. Whatever the knowledge be, we need to impart them. Okay. So now what is the process of teaching? Okay. Now let us see the process of teaching. Generally, teaching process is in this way. How we go is, a teacher is well prepared, okay, with no communication barriers. That is, it should be an effective communication. Then the message will be clear, accurate, brief, and specific. Okay. The message will be clear, accurate, brief, specific. She has to teach in sensitized and receptive. That is, when she is giving a message, a receptor, any listener should take the message. It should be in that way. Our teaching process is like a message being given from our side, and it has to be accepted also. If it is not accepted, what happens? If they are not accepting the message, what happens? They will not learn. Is it not? Yes, ma'am. So whatever the manner we are giving, any information, it has to be accepted. So now let us see that teaching process, how it goes on. We have seen this cognitive domain, psychomotor, affective domain. Generally, we know that 3 domains are the Bloom's taxonomy. Okay. In that, teaching involves knowledge. Then knowledge is knowing. That will work through our brain, knowing, cognitive development. Then attitude is your psychomotor domain, being. Okay. And doing is from your affective domain. So these 3 domains are actually important in learning cycle and teaching cycle. Okay. These, in teaching, we actually do about the cognitive and psychomotor. Psychomotor means, what is psychomotor? Where 4 things are affected of a child. That is, child's cognitive, emotional, physical movement, motor development, and social capacities also are developed. So these 4 things are touched when you are teaching something. These 4 things are touched. What are those? Cognitive domain is nothing but your brain. Okay. So same thing in psychomotor again. Psychomotor, like example, driving a car. Driving a car is an example for psychomotor domain. You can write in your running notes. Where eye and hand coordination goes in, swing, throwing a ball. Okay, like that. Oh, physical activity, ma'am. Yeah, Any any physical physical activity, playing a football, because you are using your brain also that time. You are moving your body. You are again connected with emotions, and also you want a social capacity. Capacity. Social living will also be there. Got it? Where speed is there, strength is there, coordination is there. These things is psychomotor domain. Affective domain is, what is affective domain? It is nothing but feelings. It will talk about emotions, interest, we can say enthusiasm.
motivation, values, all these things are into affective domain. So if I ask any example, can you give in affective domain examples? Reaction of a student. Reaction of a student. That is he? Are they listening to you with respect, or they are not listening with respect? Are they giving you back answers, or are they following your instructions? These all things comes under affective domain. If they are well perfect, that is, if they are optimistic person, if they are positively taking anything and responding positively, then their affective domain is good. That is, they are listening and reacting. So this actually involves in our routine, daily life. It is there because it involves feelings. Are they angry, sad, whatever it is, it will come in the affective domain. So we have to see that. So cognitive domain is nothing but your learner's ability to process information, learner's attitude and feeling, and learner's ability to use the motor skill, psychomotor. Here it is. Okay. Now, these three things are important. Now, let us see what are the types of teaching. Generally, we have seen active teaching, passive teaching, learner oriented, teacher oriented, or subject oriented. What are these types of teaching actually? Do you know what are these? Can you tell me anyone what is active teaching? Involving the children in our teaching. Teacher is directly interacting the student. Yes. That is, it will include debate, team activities, something where childs are actually given a chance to communicate more, right? This only, no, where thinking happens, discussion happens. Then child will work on practice, make decisions, solve problems. All these things are in active teaching. Passive teaching is what is passive teaching? Through some experiment or through some No. Passive means here or students are some silent. Okay, only teacher is saying. That's passive teaching. Only There's teacher. no interaction, ma'am. Students are not only listening. Students will only listen to you. Can you please Not repeat it, ma'am? What is a passive teaching? Students will only listen to you. Okay, okay, They ma'am. will follow the instructions. That's it. And learners- can you say like a social media, like some students are studying through YouTube or something? No. See, in passive teaching, there is no media used. Chalk Okay, and talk method. okay, ma'am. Silently, they will listen. If you take YouTube and all is another media, no, they will show some interactive like 3D images and all. Learner oriented. Learner oriented means how the learner will learn by own knowledge, by past experience. We can say that YouTube can be used in learner oriented, keeping student center method. Okay. What material they are learning, how they are learning, everything they will take care. Cooperative learning will be there, peer-to-peer debating, role play scenarios, all these comes under here. Collaboration and communication in the classroom happen in learner oriented. If a teacher is using any video also, it's okay. She is pausing and she is asking the questions like that, she can use. Teacher oriented is nothing but the same thing. Only teacher will speak related to the topic. She will give the subject knowledge to the children. Lecture, that's it. A lecture will be given. Like how in previously you notes will be given, lecture will be given, like that only it will be. Simple. If there are more number of people, then lecture method only mostly people are using. Yes.
teaching types of teaching is different and types of teaching methods are different. Okay, there are n number of methods. Teaching Excuse me, methods. ma'am. Yes, ma'am? पैसिव एंड टीचर ओरिएंटेड जब सेम है तो नेम्स अलग क्यों है मैम? नहीं, पैसिव साइलेंट रहते बच्चे, अच्छा, इसमें भी साइलेंट ही रहते, इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते, इसमें टीचर इंस्ट्रक्शंस रहते. Ma'am, Passive- methods नहीं and मैम, types of teaching are different, no ma'am? वो पैसिव और ये टीचर ओरिएंटेड सेम ही है, वो दोनों के लिए ये दोनों वर्ड्स यूज करने करी मैं यहाँ नीचे. ये 4 टाइप के नहीं है. टाइप्स है बट अदर नेम इज एक्टिव हाँ. का अदर नेम टीचर ओरिएंटेड, पैसिव का हाँ, अदर नेम. समझ गए? ओके, ऐसा है. Okay, ma'am. Now clear, ma'am. एक्टिव लर्नर ओरिएंटेड, पैसिव टीचर ओरिएंटेड. समझ गए? इसको स्टूडेंट सेंटर्ड बोलते हैं, इसको टीचर सेंटर्ड. अब देयर आर लॉट ऑफ एक्टिव टीचिंग मेथड्स. पैसिव इज ओनली वन वे मेथड. टीचर विल स्पीक, वो गॉन हो गया, वो इट इज गॉन. Student or learner oriented methods, there are number of learner oriented methods, active methods. Yes, what are those methods? कुछ example दो. लाइक इन सोशल सब्जेक्ट मैम, मीन्स मैम ओनली एक्सप्लेन करते, बच्चे सिर्फ सुनते. ऐसा एक्सप्लेन करते, वो तो पैसिव का छोड़ दो आप, वैसा बोलना. इसमें बोल रही मैं, एक्टिव में. एक्टिव Cognitive में method, ma'am. लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग एंगेजिंग स्टूडेंट्स. Yes, it is correct only. Still, any method specifically you want to use? While teaching them, we ask questions regarding the topic. It is inquiry based learning, Yes. problem based learning, flipped classroom, cooperative learning. As a number of Inductive learning. learnings are there. Group learning, individual learning, ऐसा lecture ऐसा रहता है ना, differentiated instructions, ये words होना, game based learning. So there are n number of things which we are going to see later in our classes. Now these are the types of teaching. So we have to go with our active mode only. So do you agree that we should apply active learner oriented in our classroom? Yes, ma'am. यस मैम. Yes. So there are teaching approaches, methods or techniques which we'll see. Like lecture method is there, lecture discussion, seminar, symposium, panel discussions, all these things are there. Can anyone read this? One of you? lecture discussion, seminar, symposium, panel discussion, group discussion, tutorials, role play, integrated teaching, horizontal or and vertical, talking point sessions, workshops, conferences. Okay. Now what any doubt in these words? Ma'am, what is the meaning of symposium, ma'am? Right. Symposium बोले तो 4 से 5 जने रहते एक ग्रुप में, उसके अंदर एक लीडर के जैसा एक्ट करते. Like group discussion. नहीं, ग्रुप डिस्कशन बोले जैसा भी नहीं रहता वो. Here he will act as a leader and he will explain. जैसा मैं बोलती नहीं, क्लास में एक बच्चे को लीडर बना देना जिसको अच्छा आता, उन्होंने रीडिंग सिखा देते हैं, उन्होंने टेबल्स याद है क्या देखते हैं, दूसरों की जिम्मेदारी लेके. Yes, ma'am. Integrated teaching means, ma'am, horizontal and vertical, मतलब इंटीग्रेशन मतलब कंबाइनिंग मतलब नहीं, horizontal and vertical भी दिए ना मैम ब्रैकेट में, मतलब. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अडल्ट लर्निंग भी कर सकते, चाइल्ड डायरेक्ट प्लेइंग भी कर सकते, दो भी चीज, लेक्चर मेथड भी करो, पैसिव भी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ गेम्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा जैसा कि अपन यूट्यूब अगर रन करें तो Both इसमें kinds of teachings are there, na ma'am?
Yes. What ma Soni? Amtul ma'am. तो इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, देखो इसका एग्जांपल इंटीग्रेटेड लर्निंग। या नहीं तो फिर अगर अपन मैथ्स पढ़ा रहे और सोशल को भी, दो सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाना रहा तो इंटीग्रेटेड टीचिंग में आता, जैसा कि थीम टीचिंग में करते हैं अपन। थीम पढ़ाते हैं, रेड कलर पढ़ा रहे, ठीक है, रेड कलर का अगर हम पढ़ा रहे तो उसमें हम क्या करते हैं, उन लोगों को बॉल्स रेड कलर के काउंट करो बोलते, तो वी आर इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स ऑल्सो। अंडरस्टूड? तो बिना नो वॉइस। ओके, हाँ मैम, यस अंडरस्टूड मैम। Yes ma'am. अब ये रीड करो। Hands on learning, storytelling, role play, sports based learning, visual clues, instructional conversations, science text cards, word games, graphic organizers, word parts, brainstorming. इसमें क्या है? हैंड्स ऑन लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, राइट? ये स्टोरी टेलिंग तो मालूम है ना? Yes ma'am. कुछ वर्ड है इसमें? anyone can ask, don't think Rubina will only ask, you can, anyone can ask. Ma'am, मैम science ये ma'am. हाँ, साइंस टेक्स्ट कार्ड्स, साइंस टेक्स्ट कार्ड बोले तो क्या रहता? एक पिक्चर मतलब एक्सपेरिमेंट देख के करना। साइंस में कार्ड्स नहीं दिखा सकते। साइंस के जैसा कि कोई क्वेश्चन रहता, अपन उसके ऊपर रीडिंग कार्ड बनाते, टास्क कार्ड के जैसा, एक उस पे क्वेश्चन लिख लेके रहते अपन पहले से। क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में जल्दी। फॉर एग्जाम्पल समझ में आ रहा मैम। एक पैराग्राफ दे दिया अपन बोर्ड के ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसके साथ अपन थोड़े टेक्स्ट कार्ड्स रख लेना, रख लेके वी स्टार्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस फ्रॉम दोस कार्ड्स। Is it like comprehension ma'am? It is like comprehension only. It is we are making it interest like a quiz. We are keeping some text cards, questions, Okay. or Some it text can is be any given and text questions are asked. related to questions. It can be related. लाइक मैम अगर पोल्यूशन के बारे में है लेसन तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कार्ड्स रख लेना, तो ये हाँ, क्या किसमें आता, कौन से कैटेगरी में आता? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वैसा भी कर सकते हैं। और इसमें अपन एक पैराग्राफ देके उन लोगों को बोल सकते हैं कि इसमें इससे रिलेटेड वर्ड है क्या, देखो। Yes ma'am. ओके ओके मैम। पैराग्राफ देके उसमें रिलेटेड सर्च करके बच्चे लिख जनरली सकते। ये टेक्स्ट कार्ड जो है वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए करते, साइंस वोकैबुलरी। समझ गए? Okay ma'am. You can write any statement about science on the text card and ask them. उसके ऊपर वो, अब जैसे आप पोल्यूशन बोले ना, तो पोल्यूशन के ऊपर कुछ इसका एयर पोल्यूशन है समझो, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन क्या है? like it causes from factories smoke तो and आप vehicle smoke. तो अपन उधर क्या दे देना, एयर पोल्यूशन के रिलेटेड एक छोटा डिस्प्ले कर देना, स्मोक दे रहा हूँ तो एक स्मोकिंग का ऐसा उतार के एक लाइन लिख देना टेक्स्ट कार्ड पे, वो लाइन बच्चों को देना। इंस्टेड ऑफ रीडर में से रीड कराने के बजाय अपन जो है एक पोस्टर वोकैबुलरी कार्ड बना रहे एक्स्ट्रा, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट आना बोले। अभी फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाते वैसी टाइप का रहता है। Yes ma'am. फ्लैश कार्ड एक वर्ड का रहता है, ये टेक्स्ट कार्ड है, एक सेंटेंस रहता लिखा हुआ, वो सेंटेंस अपन बच्चों को देके उन लोगों को बोलना उसके बारे में। Yes ma'am, got it. More interested in the subject ma'am if we do like this. तो मैम ये एलिमेंट्री में यूज होता शायद ना, छोटे बच्चों को प्री प्राइमरी में यूज होता मैम ये? Yes, it is like a picture reading.
वो पिक्चर रीडिंग बोल के नहीं, मैंगो के बारे में लिखे समझो उसके ऊपर। अच्छा ओके मैम। कार्ड तो यूज कहीं भी होता ना, इट कैन बी, इट डिपेंड्स अपॉन योर वे ऑफ डीलिंग। कार्ड तो यूज हो रहा ना, इट कैन बी ए फ्लैश कार्ड या वर्ड कार्ड। फ्लैश कार्ड ले लो या टेक्स्ट कार्ड ले लो या वर्ड कार्ड ले लो, कौन सा भी कार्ड, बहरहाल कार्ड यूज कर रहे हैं अपन। साइंस में बोल के नहीं, किसमें भी ले सकते हैं, अब साइंस में जरा ज्यादा यूज करो। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर ये सब भी समझ में आ गए। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या है मैम, समझ में नहीं। पीपीटी आता, बच्चों के उसमें बहुत सारे वो notes पिक्चर्स को बताना। ऑर्गेनाइज करने के लिए सीक्वेंस ऑर्डर देते हैं। नो नो नो, यू नो सीक्वेंस माइंड के मैप। किस स्टेप में वाई होगा वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, लाइक नो एक सीक्वेंस दे दिया। यू नो माइंड मैप, हाँ हाँ फ्लो हाँ हाँ, चार्ट्स, यस यस यस। मैम, फ्लो चार्ट्स ओके। all these things can be used to explain students। जैसा कि कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे, तो एक फ्लो यस चार्ट डाल यस, सकते हैं, माइंड एनिमल्स मैप्स आर। डिवाइड करके, 3 में डिवाइड कर कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस लिख देना, फिर फ्लो चार्ट बन गया ये। अगर जिस रिलेटेड माइंड मैप होना है तो माइंड मैप बना सकते हैं। तो दीज आर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। स्मार्ट आर्ट जो अपन पीपीटी में यूज करते हैं, इट इज लाइक मैम दैट। माइंड मैप जो है ना सोशल स्टडीज में यूज होते हैं मैम, या नहीं हर सब्जेक्ट में यूज होते हैं? सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, इंग्लिश में भी आता है, अच्छा देखो आना पड़ता करने, यूज करने आना पड़ता वो। मैम वर्ड गेम्स इज वर्ड बिल्डिंग गेम्स है क्या मैम? वर्ड गेम्स, यस। जैसा कि अब मैं क्या करती हूँ, साइंस में पोल्यूशन बोल के लिखती हूँ बोर्ड पे, अब इससे वर्ड्स वर्ड्स बनाओ बोलती हूँ, और वर्ड्स कुछ बना सकते क्या पोल्यूशन से? कुछ अच्छा वर्ड दियो, मैं पोल्यूशन से दे दी ग्लोबलाइजेशन। हाँ, तो उससे क्या बनता? पोल्यूशन है ना मैम, उसको स्टॉप करने के लिए ग्लोबलाइजेशन अपन करना पड़ता है, लाइक प्लांटिंग नहीं नहीं ट्री। नहीं, आप नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड बोलती हूँ मैं, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट से वर्ड्स ओके बनाओ बोल रही मैं, तो एक्सेल अच्छा बनता, सेल बनता। अच्छा अच्छा, लाइक दैट। यूजिंग द लेटर्स इन दैट उन वर्ड्स को पर्टिकुलर यूज वर्ड। करके। अच्छा हाँ, यस मैम, गॉट इट। मेक वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स, क्या बोलते हैं इसको अपना, पोल्यूशन। Yes, pollution is also a big लाइक word. वर्ड्स सर्च मैम, इल मतलब बनता, वही देखो वर्ड में से पोल्यूशन, सर्च करना। पोल्यूशन में इल आता, देखो ILL, पोल्यूशन, POLLUTION है, तो यस मैम ILL यस। इल बना, बीमार। I ट्यूशन, इन ट्यूशन। यस, लाइक पायलट हाँ बनता, यस पायलट मैम। बना उसमें से। समझ गए अब? yes ma'am. यस Word एक एग्जाम्पल है, वर्ड गेम्स आर मेनी। like ma'am, we can take one वर्ड word, the एसोसिएशन letter ले which सकते हैं। ends. They have हाँ, to tell another स्क्रैम्बल word, the वर्ड्स, ending एक letter. लेटर स्क्रैम्बल करके दे सकते हैं वैसे। अब आप लोग, हाँ, एक काम करो, हम्म। वर्ड गेम्स आप लोगों को कितने मालूम है, ये होमवर्क है, लिख के मेरे को ग्रुप में डालो। वर्ड को किस। एक को एक अच्छा एनाग्राम भी एक है, और हाँ, बनाना ग्राम बोल के भी एक है। So there are lot of teaching methods and learning method styles, or theories we can say. These are all example, like behaviorism का theory, दिए, Piaget की theory है, cognitive development पे 4 stages, Bloom's taxonomy है, Howard Gardner का multiple intelligence है, इनका experiential learning theory वर्ल्ड का। So there are lot of, these are the methods: blended learning, flipped classroom, game based learning, gamification। ये सब एक एक स्टाइल ऑफ लर्निंग है ये, यानी कि टीचिंग में भी आता है। ब्लेंडेड लर्निंग बोले तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कनेक्ट होना, कोलैबोरेटिव बोले तो क्लास में कोलैबोरेशन कर रहे
बच्चों को कोलैबोरेट करके वर्कआउट करा रहे, कुछ भी प्रोजेक्ट करा रहे, चार्ट्स करा रहे, कुछ भी कर रहे। फ्लिप्ड क्लासरूम गाइडेड बोले तो ऑनलाइन एक वीडियो डाल देते पहले बच्चों को, अपन बच्चे वो वीडियो देख लेते। अब क्लास में आने के बाद वी आस्क देम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट वीडियो। वी आर गिविंग होमवर्क बिफोर द क्लास स्टार्ट। ओके, गेम बेस्ड लर्निंग मतलब अब जैसा मैं वर्ड कर बताइए, आप ऐसी कुछ तो भी डाल के पहले गेम खेलना, उसके बाद आप क्लासरूम स्टार्ट करते। इट कैन बी एन आर्ट एंड क्राफ्ट से भी हो सकता, एनीथिंग। गेम कैन बी लाइक वर्ड सर्च से रह सकता, नंबर से रह सकता, एनीथिंग गेम बेस्ड लर्निंग में, वट एवर द गेम यू थिंक ऑफ। चलो होमवर्क तो ये लिख लो पहले, ये भी एक लिखो, गेम बेस्ड लर्निंग यानी तो गेमिफिकेशन का जो है, सजेस्ट सम गेम्स। इट कैन बी एनिमेशन, इट कैन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, एनीथिंग। इट शुड बी एंटरटेनिंग इन द क्लासरूम। गेम में अपन ये प्री प्राइमरी में करते थे कुछ ही, हॉप हॉप करा के 1 2 3 नहीं पढ़ाते, जंप करा के। यस मैम। गेम ही होता ना वो। ग्रेटर देन लेस देन पढ़ाते, साइट वर्ड्स पढ़ाना है तो बिंगो का गेम यूज करते, नंबर लाइन के लिए हॉप स्कॉच यूज करते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। डिजिटल गेम भी रहता, अपना ट्रेडिशनल भी रहता, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी रह सकता, एनी गेम यू कैन यूज। Here what happens, child will learn more with enthusiasm, they'll get interest. तो गेमिफिकेशन क्या है अब यहाँ? गेमिफिकेशन इज नथिंग बट जो भी अपन एकेडमिक्स पढ़ा रहे, इट शुड बी रिलेटेड विद द गेमिंग थिंग्स। ओके, like we can add a website in them on in the class, anything we can do where child will learn, enjoy, both the things should happen। यानी तो हम बच्चों को इसमें ही अपने YouTube पे वहीं पे सर्च